All right, folks, welcome to Third Eye Studio. This is PV. I run Third Eye Studio and Rolling Tusker Films, and this is one of the first podcasts on this channel. And we have a very special guest today. I have worked with her, I don't even know now how many times, for weddings, for fashion shoots, for portraits. And I Yeah. have also photographed her as a subject and her event. Mhm. So, welcome Mehwish, who's popularly known as Sana and runs the makeup and makeover services Slay by Sana on Yeah. Instagram. Welcome, Sana. Hi, PV. How are you? Thank you. Thank you Good, for good, having me on your good. studio. Without much further ado, let's get into it. So, Sana, Mhm. कब से आपने start किया makeup services and how did you get into it? Just as a background. Makeup, मैंने I officially started in 2022 आफ्टर कोविड। मुझे नहीं पता था कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बन सकती हूँ, ना कभी सोचा था। बट इन कोविड मैंने अपने आप को डिस्कवर किया ऐसे कि आई हैव दैट स्किल एंड आई कैन इफ आई पॉलिश इट मोर। लाइक आई डू ट्यूटोरियल्स, आई लर्न मेकअप माई सेल्फ एंड देन आई फिर मैंने उसके बाद सोचा कि लेट मी टेक माई पैशन इनटू सम मोर फर्दर नेक्स्ट स्टेप। आई थिंक आवर फर्स्ट मेरा फर्स्ट जो फोटोशूट था वो आप ही के साथ था। Oh, wow. Okay. या Arpita. Yeah, yeah. Yeah, अर्पिता Nice, का जो फर्स्ट nice. फोटोशूट ऑफिशियल फोटोशूट वाज विद यू। That's great to know. वो मुझे पता नहीं था आज तक. Good to know. Like I also do American weddings and Western weddings, but mostly specialty जो मैं बहुत सालों से कर रहा हूँ are South Asian weddings. And I think your specialty also is at least right now a lot of South Asian weddings, but you also kind of take on Western American weddings. यस यस या आई कैन डू Okay. ऑल काइंड ऑफ लाइक वर्क ऑन ऑल काइंड ऑफ स्किन टोन्स एंड मैं सारी वेस्टर्न ब्राइड्स भी कर चुकी हुई हूँ, मैं साउथ ईस्टर्न ब्राइड भी कर चुकी हुई हूँ एंड विद ऑल काइंड ऑफ कल्चर्स एंड एथनिसिटी। Nice. तो South Asian weddings, Indian, Pakistani, or and Western में क्या what's the difference? I mean, skin tones difference होती हैं, but makeup wise भी कुछ differences होती हैं? ऑफ कोर्स या अ लॉट। इन वेस्टर्न मेकअप दे वांट वेरी उनकी स्किन ऑलरेडी इतनी लाइट होती है कि आप उसके ऊपर बहुत ज्यादा हैवी और किकी मेकअप नहीं कर सकते, सो यू हैव टू आपको स्लोली उनके मेकअप के साथ बिल्डअप करना पड़ता है उनको, बिकॉज there is a very slight line where you have to stop the makeup. You know, you cannot go very bold with the lighter skin tone. So उनका makeup बहुत subtle, बहुत soft, and we play with a very soft and neutral and very subtle colors with them. South Asian, because we are mostly brown skin and they have Mhm. a pigmentation on their face as well, like so much like we have a dark circle problems and some other parts of the face we have to cover. Different skin tones होती हैं, like some part of the face are lighter and some are darker, so we have to maintain that कि हमें पहले उस skin tone को same करके लाना होता है। और प्लस हमारी जो वेडिंग के ड्रेसेस होते हैं वो बहुत ब्राइट और ग्लिटरी और Right. ग्लिमरी होते हैं। सो उनके साथ आप बहुत लाइट मेकअप करेंगे तो वो आप your face will look more dark, your skin tone will look more dark, so we have to enhance the skin tone in order to um, look good with that kind of a heavy dresses. You know, the wedding Mhm. dresses are very like they're very bright. They have so much work, and when the right light reflects on them, वो लाइट आपके चेहरे पे भी रिफ्लेक्ट करती है। तो अगर आपका मेकअप थोड़ा सा एनहांस्ड नहीं है और ग्लैम नहीं है, so you're not gonna look good. Mhm. So that's why Okay. we have to pay extra, like two times extra effort on the South Asian brides as Got it. compared to the Western brides. Obviously, we are discussing specifically with respect to weddings. Of course, you do other Mhm. events and other kinds of makeup also, but ये podcast is more centered mostly around weddings. तो Yeah. एक मेरा experience रहा है, and Mhm. you know this because we work together on some Mhm. weddings and some other events, Mhm. कि डिले बहुत होता है। Yes. हमेशा क्या होता है कि कपल शूट या Mhm. वेडिंग के पहले भी Mhm. ब्राइडल पोर्ट्रेट्स जो है वो इज राइट आफ्टर द मेकअप, राइट? Yes. Yeah. एंड मेकअप का एक बजटेड टाइम होता है, इतने घंटे लगेंगे, बट बिल्कुल। इनवेरिएबली 99% ऑफ द टाइम्स
Yeah. एंड ये तब भी हुआ है जब वेडिंग प्लानर्स इन्वॉल्वड होते हैं, कुछ भी होता है, तब भी ये मैंने देखा है कि Yes. ब्राइड्स कम लेट फॉर द फोटोशूट, Yeah. और हमने रखा होता है, Mhm. कुछ 1 घंटा रखा होता है या 45 मिनट्स रखा होता है, एंड Yes. अल्टीमेटली उसे 10-15 मिनट में खत्म करना होता है। सो इतना एलाबोरेट मेकअप करने के बाद, लुकिंग ग्रेट, कॉस्ट्यूम पहनने के बाद वो सब हो जाता है, लेकिन जब तक ब्राइड आती है तब तक टाइम नहीं रहता है शूट Time करने नहीं का। रहता, I know, I तो know. इसका Yes. हल क्या है? ये इसमें मसला क्या होता है और हल क्या है इसका? इसमें मसला ये होता है, मसला तो ख़ैर देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल, लाइक द ब्राइडल मेकअप टेक्स ऑफ कोर्स 3 hours or more in that. And sometimes the bride comes late because there are उनके पहले के भी इवेंट्स चल रहे होते हैं, वो उसकी वजह से लेट हो जाते हैं, कुछ प्रेप्स उनकी रह जाती हैं. And then sometimes when we are doing the makeup, something goes wrong. Sometimes the blush is not working, or कभी कभार आप कोई बहुत ही important चीज लाइक हेयर एक्सटेंशंस, मोस्ट ऑफ द forgets their hair extensions. तो कभी कभार किसी फैमिली मेंबर से हेयर एक्सटेंशंस मंगवा रहे होते हैं, कभी ज्वेलरी खराब हो जाती है, काम नहीं कर रही होती, कभी कभार there are so many factors involved. But we, of course, whenever you are doing the bridal makeup or the on your big event, you have to keep aside a 4 to 5 hours, because हुँ, बहुत सारे आउटसाइड फैक्टर्स होते हैं कि जो एंड में, बिकॉज मेकअप और हेयर के बाद आपकी ज्वेलरी सेटिंग, आपकी दुपट्टा सेटिंग, एंड देन राइट, समटाइम्स वी आर टेकिंग पिक्चर, एंड समटाइम्स द फैमिली वांट्स टू टेक पिक्चर बिफोर एंड या आफ्टर, और बिहाइंड द सीन्स. या सो वो दैट बहुत हैपेंस. इम्पोर्टेंट है, नंबर 1। सेकंड, या. हम्म. आई थिंक टाइम मैनेजमेंट। अगर कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आपको कहता है कि अ, या कहती हैं कि 2 घंटे के अंदर मेकअप हो जाएगा, दैट इज़ या. इम्पॉसिबल, वेडिंग के लिए स्पेशली, राइट? यस. इवन नो. इफ इट इज़ अ लाइट मेकअप या हेवी हम्म. मेकअप, जिस तरह की भी मेकअप हो, आई ओह थिंक नो. टाइम तो 3 घंटे से Of ऊपर ही course, लगना है। 3 hours and more. इसलिए in fact I remember I had a bride and she was like, okay, मुझे बहुत light soft और बहुत natural सा makeup look चाहिए. So I tell her कि okay ठीक है, then we have to start at least 3 hours before, and she was like, no 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 no, इतना इतना heavy नहीं चाहिए मुझे, मुझे बहुत light से चाहिए. And I explained to her कि it's not about how light or how heavy you want to do it. This is all about the process, from starting from the skin prep, makeup, hair, हुँ, हुँ, dupatta setting, jewelry setting, your own setting. Sometimes your shoes are like not like आपको काम नहीं कर रहे होते, आपके पैरों में चुभ रहे होते हैं, then you have to change the shoes as well. So या, so बहुत सारी चीजें होती है जो ब्राइड को अपने माइंड में रखनी चाहिए. एंड प्लस आई वुड, एक चीज मैं यहाँ पे जरूर बोलूंगी, ऑल दी अपकमिंग ब्राइड्स, मेक श्योर कि आपके बिग इवेंट से पहले आपकी सारी चीजें एक जगह पे रेडी हों, आपकी एक्सटेंशंस, इवन कि आपके इयररिंग्स के पीछे के जो स्टॉपर्स होते हैं, वो भी प्लीज़ आप अपनी किट में ज़रूर रखें. और अगर आप एक हेड ज्वेलरी लगा रही हैं तो और आपको समझ में नहीं आ रही है, तो कीप ऑल ऑफ द पॉसिबल ऑप्शंस राइट, and make sure like all these things you have to be like they should be in your suitcase or in your bag a night before. और उसमें आप लेट भी हो रहे होते हैं, and that panic comes on the bride's face as well. राइट, So when the राइट। bride mostly come, they are like, oh, I don't know what I have to do. I have a lot of things to take care of. So हुँ, हुँ, please अपनी सारी prep एक दिन पहले करके रखें, ताकि आपकी हर चीज़ टाइम पे स्टार्ट हो सके, और आपका जो इवेंट है, जिसके लिए आपने इतनी प्रिपरेशन की है, वो सब चीज़ें बिल्कुल स्मूथली हम लोग कर सकें. या और ये भी है कि मेकअप खत्म होते साथ तो शूट शुरू नहीं हो सकती है, मेकअप नो. के बाद चेंज होता है, और चेंज करते यस. समय फिटिंग यस. कभी प्रॉब्लम होता है, बहुत सो सारी चीज़ें उसको होती सॉल्व करना होता है। हैं, बहुत सारी. उसके बाद आफ्टर यू वेयर द कॉस्ट्यूम थोड़ा टच अप एंड यस, हेयर वेयर यस, वो यस. होता है। उसके बाद दैट्स ट्रू. ट्रैवल टाइम हो सकता है, उसके बाद मेकअप मेकअप आर्टिस्ट वांट सम पिक्चर्स तो अपने रील्स के लिए मैं तो उसका टाइम। इतनी इतनी चीज़ें हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन. लाइक या, समटाइम ब्राइड्स आर ब्रिंगिंग देयर कॉन्टैक्ट लेंसेज़, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज़, एंड दे नेवर वियर देम. लाइक उन्होंने या, कभी पहले नहीं पहनी हुई होती, एंड ऑन दैट डे दे वांटेड टू ट्राई. और राइट, उनसे वो हो नहीं होता, बिकॉज़ इट्स नॉट ईज़ी फॉर या, एवरीवन, एंड या, समटाइम वी आर हेल्पिंग देम, समटाइम, एंड इसमें आराम से 30 मिनट्स आपके निकल जाते हैं, या, आराम से. So those या, things that if you are like अगर आप स्पेशली कॉन्टैक्ट लेंसेज की मैं बात करूंगी, अगर हुँ, आप अपने शादी वाले दिन कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना चाह रहे हैं, तो प्लीज ट्राई देम बिफोर, गेट यूज टू ऑफ देम राइट, 2 weeks before at least. Do not try that on the same day of your wedding event. या, Do not या. do that, please. Yeah. So bottom line, brides, do Yeah. not underestimate
कि मेकअप जो है स्पेशली वेडिंग डे या उसके प्रीवियस या, डे या उसके रिसेप्शन वाले डे आपका 2 या, घंटा में हो जाएगा, नहीं होगा, सो 3 घंटे तो बेयर मिनिमम उसका रखिए और बफर यस, टाइम 45 मिनट्स टू 1 आवर और इवन 1 एंड हाफ आवर्स रखिए, ताकि हुँ, इट इज़ नॉट ईटिंग इंटू योर पिक्चर्स टाइम। वरना वही एग्ज़ैक्टली, होगा कि आपने मेकअप कर लिया, यू आर लुकिंग गॉर्जियस बट आपके मतलब 4 पिक्चर्स आएँगे शॉर्ट्स नहीं है, एंड देन एग्ज़ैक्टली, यू नो यू विल रिग्रेट दैट बिकॉज़ दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेज़ एग्ज़ैक्टली, वन्स इन अ बिल्कुल, लाइफटाइम बिल्कुल, वाला डे है ये। ग्रेट, सो दैट्स फैंटास्टिक। व्हाट शुड brides take care of before they come for the makeup? Y कुछ प्रिपरेशन लगती है even before they come and sit before you? नहीं, जस्ट बिफोर ऑन द डे बिफोर नो, जस्ट मैं तो सिर्फ सब साइड बैठ के कहती हूँ कि एक तो जितने भी आपकी स्किन केयर ट्रीटमेंट्स है दैट हैज़ टू बी डन कंप्लीटेड, डन एंड कंप्लीटेड 2 वीक्स बिफोर, नो मोर, और प्लीज़ इन 2 वीक्स के अंदर कोई नई चीज़ ना ट्राई करें, जिससे आपको नहीं पता कि उसका रिज़ल्ट क्या हो सकता है। Reduce all the oily foods, all the spicy foods in your diet, because that can cause the breakouts on your face because you are already stressed out because of this event. तो ये चीज़ें नहीं करें, हाइड्रेशन अपने पानी पिएँ, जितना पी सकते हैं, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड एंड टेक अ गुड स्लीप, एंड दैट्स ऑल वी नीड एटलीस्ट अ वीक बिफोर फ्रॉम अ ब्राइड। कोई स्किन प्रेप नहीं चाहिए, जस्ट यूज़ अ नॉर्मल मॉइस्चराइज़र बिकॉज़ मोस्टली मेकअप आर्टिस्ट और स्पेशली मी, we do the skin prep before the bridal makeup. So Mhm. that we don't need anything that you have to put it on your face. So that those are all the tips that I needed. Just take care of your skin inside out. गॉट इट, गॉट इट। अच्छा, एक एक प्रॉब्लम मुझे होती है व्हेन आई एम टेकिंग पिक्चर्स ऑफ द ब्राइड और स्पेशली अगर ये इवनिंग वेडिंग है या रिसेप्शन है, नाइट को हो रही है Mhm, तो हमें लाइट्स लगाना पड़ता है। वैसे वेडिंग में भी इंडोर है तो लाइट्स तो लगाने ही पड़ते हैं mhm. एंड Yeah, ये लाइट्स जो होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग लाइट्स होते हैं, राइट? तो yeah, काफ़ी रिफ्लेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल स्पेशली साउथ एशियन यू नो वी हैव दैट टेंडेंसी थोड़ा थोड़ा भी अगर ऑयली हो गया या मेकअप में थोड़ा शाइनी mhm, आई डोंट नो व्हाट यू कॉल इट ब्रोंज़र या कोई वो इफ यू पुट इट स्टार्ट्स रिफ्लेक्टिंग और वो हॉटस्पॉट्स की yeah. तरह फेस में आता है, राइट? सो एंड Reflect यू एंड आई करता हैव है, yeah. डिस्कस्ड That's दिस कि हम mhm, लाइक पोर्ट्रेट शूट या फैशन शूट के पहले हम कहते हैं कि वो थोड़ा mhm, टोन डाउन कर लें ताकि वो ना हो, बट आई थिंक yeah. सम ब्राइड्स आस्क They फॉर want it. सम काइंड ऑफ लुक। वो क्या लुक Yeah. है और उनको क्या समझाना चाहिए कि ये बहुत रिफ्लेक्टिव ना हो जाए? That's basically demand in like right now. Mostly brides, we call it highlighter, or we call it a dewy skin or more glowy skin. हुँ, Today's brides are more towards a more natural, like they want वो मेकअप के बाद चाहती हैं कि हमारा नेचुरल ग्लो नजर आए, स्किन बहुत ही like well hydrated और ग्लोई नजर आए। So that's why they asked us and we do the makeup accordingly, like हमें हम ऐसे प्रोडक्ट्स यूज करते हैं कि जिससे जो चेहरा जो नेकेड आई से आप बहुत ज़्यादा डूई और ऐसा लगता है कि जैसे आप बेयर फेस हैं। बट ऑफ हुँ, कोर्स आई गॉट दिस कंप्लेंट फ्रॉम मैनी अदर photographers as well कि when you put too much highlighter on your face, हुँ, it looks good in the mobile light, of course. When या, you see the picture with the mobile, it looks very dewy because you can या, like change your position of your face and you can adjust the angle. But when you are going towards the professional photography, या, वो रिफ्लेक्ट करती है चेहरे के ऊपर, ऑफ या, कोर्स। तो मैं भी कहूँगी ब्राइड्स को कि डू द हाइलाइटिंग बट नॉट ओवरडू इट। टू मच हाँ, या हाँ, नॉट टू मच बिकॉज़ ऑफ कोर्स आपकी आपकी आज के इस दिन के बाद जो मेमोरी रह जाएगी वो आपकी पिक्चर्स में ही रह जाएगी, एंड यू शुड राइट, वरी मोर अबाउट दोज़ पिक्चर्स, दोज़ या, पोर्ट्रेट्स, एवरलास्टिंग एंड मेमोरीज़। हुँ, और ये कुछ हद तक हम एडिटिंग में, रिटचिंग में उसको या कम कर सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड, बट यू यस। कांट जस्ट ओवरडू डोंट इट, डू फिर टू वो मच, स्किन या प्लास्टिक लगने लगता है, राइट? सो दैट्स एग्ज़ैक्टली, व्हाई एग्ज़ैक्टली। इट्स इम्पोर्टेंट अगेन फॉर द फोटोग्राफर, ब्राइड एंड द मेकअप आर्टिस्ट टू टॉक टू ईच अदर, टॉक टू यस, यू नो टॉक इन अ या, ग्रुप सो दैट वी अंडरस्टैंड टू व्हाट एक्सटेंट ये हाइलाइटर जा इतना सकता है और ये मैं खुद ड्यूई उनको लुक जो गाइड है। करती हूँ कि डोंट डू टू मच बिकॉज़ अदरवाइज़ योर फेस विल लुक ऑयली। या, बट समहाउ देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट कि चूँकि वो लोग रील्स देखते हैं और ऑल काइंड ऑफ दिस टिकटॉक्स गोइंग ऑन, और समझते हैं कि जी इतनी लाइट डालेंगे तो हम इस तरीके से ट्यूब लाइट और बल्ब लगेंगे।
it does not look good. That actually looks Mm. very artificial on your face. Right, So right. just a soft little highlighter is good, and this is gonna help the photographer as well. But don't put too much highlight, especially on this and this area that makes your face look, especially this area that makes your look face very oily. And I Got know it. that photographers like you have so much problem with that. अच्छा, ये जो ट्रायल मेकअप होता है, Hmm. इज़ इट हाउ नेसेसरी इज़ इट? It is very necessary. Oh my God, this Okay. is especially in fact अभी जो हमने बात की time management की on the big day, on the main day, you know, trial makeup saves a lot of hassle on that day. So Mhm. first of all, when you do the trial makeup, you get to know the makeup artist. Of course, आप Yeah. उससे बात करते हैं, आप उससे मिलते हैं, एक personality और एक आपका relationship build up होता है उसके अंदर. देन यू कम टू नो के जो मेकअप आर्टिस्ट के साथ आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके माइंड में, जो भी आपने सोचा हुआ है कि दिस इज हाउ आई वांट टू लुक, आर यू बोथ ऑफ यू आर अलाइंड विद दैट कॉन्सेप्ट और नॉट. सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब ट्रायल करते हैं तो मेकअप आर्टिस्ट को भी आपकी बात पता होती है कि आप कितने कंफर्टेबल हैं मेकअप में, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपके माइंड में क्या है बिकमिंग अ ब्राइड, और किस लेवल का मेकअप में को आप समझते हैं कि जी दिस इज बिकॉज सम टाइम पीपल आर सेइंग के मुझे बहुत dewy और मुझे बहुत सॉफ्ट लुक चाहिए, बट व्हेन आई आस्क देम फॉर द इंस्पिरेशन पिक्चर, it's a very heavy Yeah. and very highly edited makeup, and I just have to explain to them that this looks light but this is actually not light. So उनको इस चीज के बारे में एजुकेट करना भी बहुत जरूरी होता है कि जो आप इंटरनेट पे देख रहे हैं दैट्स एक्चुअली कैन नॉट हैपन इन दैट केस. और प्लस हमारे लिए बहुत सेफ रहता है कि अगर मैं उनकी बात नहीं समझ पा रही हूँ और मेरा स्टाइल डिफरेंट है उनके मेकअप से, तो हुँ। देन आई वी करेक्ट दैट, वी बैलेंस दैट कि नहीं आपके ऊपर मतलब यू नो दिस इज हाउ वी गोना डू इट. एंड प्लस मुझे ये भी बताना होता है कि सम टाइम दे हैव अ वेरी रॉन्ग इमेजिनेशन कि भाई हम ये मेकअप कराएंगे तो हम इसमें अच्छे लगेंगे, तो हमें उनको बार बार इस बात बात उसके ऊपर भी बार बार उनको समझाना पड़ता है कि यू नो दिस लुक्स गुड ऑन यू एंड दिस इज नॉट. प्लस अगर हम जब ये चीज़ हमारी डन हो जाती है, जब हम फाइनलाइज़ कर लेते हैं, तो जो क्लाइंट होता है या जो ब्राइड होती है, वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाती है कि यार यू नो हम लोग अलाइन्ड हैं एक चीज़ के ऊपर, एंड देन दैट्स हाउ वी गोना गो ऑन द बिग डे. सो जब हम लोग शादी वाले दिन स्टार्ट करते हैं, तो हमें एग्ज़ैक्टली पता होता है कि देयर इज़ नो इफ एंड बट्स, देयर इज़ नो मोर क्वेश्चन आस्क्ड, वी जस्ट गो स्टार्ट डूइंग द मेकअप एंड वी नो एग्ज़ैक्टली व्हाट्स गोना बी द रिजल्ट. So that saves a तो lot of time for us. तो ऐसा कभी हुआ है या जनरली होता है कि बिकॉज़ मुझे नहीं पता है ये Mhm. कि ट्रायल मेकअप के बाद द ब्राइड एंड द मेकअप आर्टिस्ट डिसाइड इट्स नॉट वर्किंग आउट एंड देन दे फिगर आउट समवन एल्स ऐसा भी हो सकता है, राइट? Yeah, या yeah, that's normal. That's very normal. ओके, बिकॉज़ आप सम टाइम आप एक-दूसरे को नहीं कनेक्ट कर पा रहे होते हैं राइट, और वो नहीं समझा पा रहे होते हैं, और सम टाइम एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन चॉइस, एंड या उनको अगर नहीं समझ में आता तो दे कैन दे दैट्स व्हाई द ट्रायल मेकअप हैपेंस, बिकॉज़ इफ दे राइट आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ये हाँ, मुझे इसका मेकअप समझ में आया, सो दे कैन फाइंड अनदर वन, ऑफ कोर्स. एंड ये ट्रायल मेकअप्स आर आल्सो पेड फॉर? Yeah, yeah, they are ओके, separately. They are separate ओके. from the bridal service. Got it, got it. Mhm. So that's a good thing to know that Mhm. brides, make sure you kind of Yes, shortlist a few makeup yes, artists and yeah, definitely do a trial makeup. I know it kind of the cost kind of runs a little, but yes, I think it's really, really beneficial so that you know exactly kiske saath aapka wavelength, is working that's out true. and what you need versus what the expertise the MUA brings in. And then, Exactly. that kind of that और finds a बहुत सारे common क्वेश्चंस, और फिर भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं लाइक बट व्हाट काइंड ऑफ अ प्रोडक्ट द मेकअप आर्टिस्ट इज यूजिंग, right. एंड व्हाट इज हर टेक्निक, और मतलब यू नो हो सकता है कि पिक्चर्स में कभी-कभार नहीं नजर आ रहा होता है कि सम पीपल डोंट लाइक टू मच सेटिंग पाउडर ऑन देयर फेस, सो यू नो Mhm. बहुत सारी चीजें उसी वक्त आप एक दूसरे की समझ रहे होते हैं. तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. आई मस्ट से कि प्लीज लाइक अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को फाइनलाइज करना चाह रहे हैं तो आप पहले उसे एक मेकअप ट्रायल जरूर करवा लें. Mhm. या. So let me ask you this, Slay by Sana का signature style क्या है? अगर अगर है तो क्या है? um स्ले बाय सना मैंने हमेशा लाइक आई ट्राई टू लिसन टू द क्लाइंट, यू नो, Mhm. चाहे वो ब्राइड हो चाहे वो मॉडल हो,
कुछ लोग बहुत कंफर्टेबल होते हैं मेकअप से एंड दे और एक्चुअली हैव अ समथिंग इन देयर माइंड, आई ट्राई टू रेप्लिकेट इट एंड कुछ लोगों को नहीं पता होता, सो आई ट्राई टू डू माय वर्क ऑन देम। तो एज़ सच तो मेरा कोई ख़ास सिग्नेचर नहीं है, आई कैन डू ऑल काइंड ऑफ अ मेकअप स्टाइल्स बिकॉज़ व्हेन यू हैव लाइक आई हैव वर्क इन न्यूयॉर्क फैशन वीक, सो वहाँ पे आपके पास वो नहीं होता कि यू नो यू कैन ट्राई ऑन योर ओन, they gave you a mood board and you have to do the makeup Yeah, exactly like that. So if you should every makeup artist should have a skill कि वो हर तरह का मेकअप, चाहे वो dewy हो, चाहे वो glam हो, चाहे वो बिल्कुल soft neutral हो या smoky हो, they should be able to pull it off. But जो मेरा है वो मोर लाइक अ मॉडर्न स्टाइल है। मैं बहुत वैसा मेकअप नहीं करती कि जो बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल टाइप का होता है। माय मेकअप रिफ्लेक्ट्स मोर सॉफ्टनेस, लेस इज़ मोर काइंड ऑफ माय स्टाइल। right, right, right. So now with Instagram and TikTok and so many reels and हाँ। so many pictures and videos floating around, हुँ, हुँ। फिलहाल ट्रेंडिंग क्या चल रहा है? लाइक ब्राइड्स को थोड़ा-सा सटल मेकअप चाहिए, नॉट टू ड्रामेटिक एंड समथिंग लाइक वेरी टाइमलेस लुक, जिससे वो एक खास टाइमलाइन में ना कैद करके रखें। व्हेनेवर दे लुक बैक टू देयर फोटोज़, दे इट शुड लुक टाइमलेस कि मैं यू नो दे आर लाइक परफेक्ट फॉरएवर। स्पेशली दे आर मोर इंस्पायर्ड फ्रॉम द ओल्ड टाइम व्हेन जब ब्राइड्स बहुत कम मेकअप कर आती थीं और इतना मेकअप का कॉन्सेप्ट नहीं था, सिर्फ़ एक लिपस्टिक और एक आईलाइनर ही उनका पूरा मेकअप होता था। तो brides are like leaning towards more to that time कि जिसमें and they wanted to look like them, like they Yeah, don't want to transform themselves something to different person के लोग बोले ये कौन है, like पहचान में नहीं आ रही, no, they wanted to look, even they most of the brides तो ये भी कहती हैं कि प्लीज हमारी स्किन टोन को बहुत ज्यादा लाइट मत करिएगा, हमें बिल्कुल नेचुरल स्किन टोन चाहिए जो हमारी right. अपनी है। हम नहीं चाहते कि हमारी स्किन टोन चेंज कर दे बिकॉज मेजोरिटी ऑफ द टाइम जो हमारी साउथ एशियन ब्राइड्स हैं और जो हमारे कंट्रीज में Mm. काम होता है उसमें होता है कि वो 5 टाइम्स आपकी स्किन टोन चेंज कर देती है। मतलब आपके हाथ और आपकी स्किन इज़ कंप्लीटली ऑपोजिट टू ईच अदर। तो दे आर Yeah, नॉट लाइकिंग दैट एट actually ऑल। that's a good point. एक चीज मैंने नोटिस किया है and this हुँ, हुँ। happens with and brides be careful. हुँ, I हुँ। know cost wise कम होगा but a lot of times you go to a makeup हुँ, artist who's just kind of first few brides or something. एक चीज हुँ, मैंने हुँ। नोटिस की है हुँ, हुँ। that मेकअप यहाँ तक होता है, फिर यहाँ हुँ, पे वो हुँ। कलर पूरा चेंज हो जाता है। एंड व्हाइल आप जब मेकअप में बैठ रही हैं और लाइट ऐसे वो सर्कल वाला लाइट होता है, उसमें पता नहीं चलता है ये। बट यस, व्हेन वी पुट आवर लाइट्स व्हिच आर मच स्ट्रॉन्गर, यस। इट कम्स आउट वो वेरी, कॉन्ट्रास्ट नज़र वेरी आता है। या it's very बिल्कुल। stark that there is a shade difference between the face where the makeup is ending and the neck and the एग्ज़ैक्टली। shoulders if they're exposed. So be careful यप, about that. I यप। think your whichever part of your body is being इट हैज़ टू exposed, बी वो सेम same shade. या यस, स्किन टोन आपकी मैच करनी चाहिए Yeah. आपके मेकअप। So one thing I noticed and ये मैंने notice किया हुँ, हुँ। हमारे जैसे आपने कहा था हमारे पहले ही शूट में अर्पिता का हुँ, जब हुँ। शूट की थी वो एक्चुअली इट वाज वेरी हॉट आउटसाइड ओह बहुत यस, गर्मी थी आई एंड आई रिमेंबर। डिडंट इवन नो यू एट दैट टाइम एंड मैंने हुँ, हुँ। एक चीज नोटिस की कि आई थिंक वो गर्मी में हम आई थिंक ऑलमोस्ट 1 आवर वी शॉट यस। लेकिन मेकअप को कुछ नहीं हुआ एंड इसके पहले मेरा एक्सपीरियंस हो चुका था कि एंड हुँ, हुँ। उस हीट में मैंने लाइट भी लगाए थे तो हुँ, हुँ। how does how does that work? Is that due to the products used or how do you ensure that जितनी भी गर्मी हो जो भी हो हुँ, हुँ। यस, the even though there will be the bride will be sweating in that kind of a heat. I mean, I just covered a couple of wedding या, outdoor events in the यस, last 1 month and it was like 90 plus degrees outside आई नो, आई or रिमेंबर दैट। almost 100. So how do you ensure that कि वो ना हो? दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि वी मेक श्योर कि आपकी जो जो भी आपके पास मॉडल है, ब्राइड है, जो भी आपकी चेयर पे बैठा है, आर दे गेटिंग रेडी फॉर द वेडिंग, आर दे गेटिंग रेडी फॉर द फोटोशूट, यू शुड द मेकअप आर्टिस्ट शुड नो बिकॉज़ वी हम लोग पहले टेम्परेचर भी देखते हैं कि इस वक़्त अगर मेरे पास कोई 12 बजे कोई ब्राइड आई है एंड शी इज़ सेइंग कि आई हैव अ शूट एट 3 पीएम एट सम पार्क
and it's gonna be a too much daylight or like that. So I have to make sure कि मैं उसकी स्किन को इतने अच्छे से प्रेप करूँ और उस पे जो फाउंडेशन या जो भी प्रोडक्ट मैं यूज कर रही हूँ, it has to be sweat proof and Hmm. they have to be like make sure कि वो um, oxidize नहीं हो because when your skin gets hot from inside, your makeup start oxidizing. तो हम लोग ऑफ कोर्स प्रोडक्ट इज द मेन थिंग आपको इतनी नॉलेज प्रोडक्ट्स की होनी चाहिए कि अगर आप एक इंटेंस वेदर में जा रहे हैं चाहे वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी है या बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम समर है तो आपको कौन सी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है एंड इन द डे टाइम आई ऑल्सो सजेस्ट कि आप डू नॉट गो वेरी like a very bold and very bright makeup under the Hmm. sun, but that looks so bad. So always Hmm. tone down your skin tone, like stay within your own skin tone. Don't go like 2 or 3 shades lighter than your skin tone. तो ये है कि because first of all the products and the second is how you lock your makeup on the Look. face. Hmm. या बिकॉज अगर आपने सही से मेकअप को लॉक नहीं किया है विद सेटिंग स्प्रे एंड विद मल्टीपल ऑफ सेटिंग्स लेयर्स ऑफ सेटिंग स्प्रे और मल्टीपल layers of setting powder, then your makeup definitely gonna melt because your skin produces oil. Of course, if you are under Yeah. the sun, you're gonna sweat, your pores gonna be open, तो वो नजर आता है. But there are so many good products in the market कि जो आपको एक्सट्रीम वेदर के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं. But a Right. good makeup artist should have the knowledge about that. So the next question is, how long before the wedding, days, Mhm. weeks, months, should the brides book Sana? As soon as possible, as soon as you find out your dates, आपका जैसे प्लान फाइनलाइज होता है even before sending the word out कि I'm getting married or this is the date gonna be, you should book your makeup artist, you know, or you actually at least have to circle down or finalize the makeup artist कि मैंने इन 3 makeup artists को reach out करना है, इनकी availability देखनी है and start working on that. Don't sit till the end because good makeup artist gets booked very fast और फिर आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं वो आपको एडजस्ट करते हैं और उसके अंदर बहुत ज़्यादा लाइक यू नो हैसल होता है. We have to juggle with the timeline and everything, so it's hard. We don't want to say no to any client. तो हम जितनी कोशिश करते हैं कि जितना अकोमोडेट कर सकें करें लेकिन अगर आप अपनी लाइफ का ये जो स्पेशल इवेंट है उस दिन बेस्ट एक्सपीरियंस आपको चाहिए, सो यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ दैट. सो ऑफ कोर्स अगर आप 6 मंथ्स पहले आपकी बात तय होती है, आपकी 1 ईयर पहले 1.5 ईयर पहले आपकी डेट फिक्स्ड होती है, यू हैव टू बुक योर ब्राइडल आर्टिस्ट as soon as possible because they get booked like way in advance, sometime Yeah. 2 years in advance, sometime 1.5 year in advance. Wow. तो इस चीज के ऊपर आपको you know you have to be like work very And very especially Indian Hindu weddings में तो वो मुहूर्त का डे भी होता है. So there are oh a yeah, lot of weddings on a particular day. So yes, you they know, cannot move good anywhere. makeup artists would already be booked. So yeah, it's as early Yeah, as you can, but at least 6 months yeah, or the moment you get to know the yeah. dates. So आपके पास ऐसे कोई ब्राइड्स आते हैं जो काफी नर्वस होते हैं और एंड एक तो स्ट्रेस होता है कि कुछ it's स्ट्रेस a वाले big होते day. हैं, कुछ ब्राइड्स ऐसी भी होती हैं कि दे आर एक्चुअली द कुछ ब्राइड्स ऐसी भी होती हैं कि जो खुद अपनी शादी की इवेंट प्लानर होती हैं. तो हाँ. उधर बड़ी So प्रॉब्लम होती है लोगों को. yeah, they're always on the call. Yes, they are always on the call, they are getting the calls और मैं चाहती हूँ कि जब ब्राइड मेरी चेयर पे बैठे तो she has to be relaxed and enjoy the experience because that's your Yeah. day. Enjoy that कि आप पैम्पर्ड करें अपने आप को, रिलैक्स करें, अपने उस डे के बारे में सोचें, अपने फ्यूचर के बारे में सोचें, उस इवेंट के बारे में सोचें जो होने वाला है कि एवरीथिंग गोना बी गुड. बट दे आर लाइक ओह मुझे उसको बताना है कि उसने फलानी चीज़ वहाँ पे से उठा के वहाँ फॉरवर्ड कर दी कि नहीं. एंड प्रॉब्लम ये है कि द होल फैमिली इज कॉलिंग द ब्राइड एज वेल. अच्छा Yeah. तुम बताओ कि ये कहाँ रखा है वो कहाँ रखा है तो प्लीज प्लीज मैं Delegate. करूंगी Yeah. कि या So how do you calm people? I mean, एक तो वो समझ में आता है busy हैं because of their planning, but let's say a bride is really nervous and just nervousness and stressed out because it's a big day. How do you यस. kind of calm them down before you get That's a very good question. We have to first calm down ourselves answer? सबसे पहले because हमारे पास एक टाइमलाइन है उसमें हमें सारे मेकअप भी कंप्लीट करना है और सारे ड्रामा से भी गुजरना है.
So, and there are so many dramas happening in the family as well, because most of the time when we are working at the venue and all the family members and all the bridesmaids are getting ready in the same room, and the chatting is happening, and mom is there, or some emotional things is happening as well. तो उसमें हम लोग को बड़ा ही रिलैक्स और ब्राइड को बार-बार याद कराना होता है कि रिलैक्स, काम डाउन, योर मेकअप नॉट गोना लुक गुड। सो Hmm. ये जब ब्राइड सुनती है तो उसको एकदम होता है कि नो, 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 मेकअप शुड लुक, सो या बिकॉज़ अगर आप स्ट्रेस में हैं, अगर आप बार-बार हँस रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, आपके चेहरे पे लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं, आपकी आँखों के नीचे लाइन्स आना शुरू हो जाती हैं, और जैसे मैंने पहले कहा कि प्लीज़ हैव अ गुड नाइट स्लीप बिफोर योर शादी, बिकॉज़ इफ यू आर टायर्ड, यू हैव अ लैक ऑफ स्लीप, आपकी आईज़ पफ़ी लगती हैं, आपकी आईज़ की जब पफ़ीनेस खत्म होती है तो आपकी आँखों के नीचे ऑटोमैटिकली एक्स्ट्रा रिंकल्स आ जाते हैं थकन से, एंड दे शो अप। और फिर जब हम Yeah, लोग उस मेकअप से छुपाने की कोशिश करते हैं तो दे लुक टेकी, एंड देन दे से कि जी मेकअप अच्छा नहीं हुआ बिकॉज़ हमारी आँखों के नीचे लाइन्स आ रही हैं। लाइन्स इसलिए आ रही हैं बिकॉज़ यू वर टायर्ड। तो yeah. और फिर रोना, इमोशनल चीज़ें चल रही होती हैं, उसमें रोना भी आ रहा होता है, तो प्लीज़ वो सारे उस दिन के लिए ब्राइड को भी रिलैक्स करें, और सब लोगों को चाहिए कि अपने इमोशंस को भी थोड़ा-सा लाइक कंट्रोल करें। So what should a bride avoid हुँ, हुँ। doing before the makeup, or what mistake could be made which they should avoid? दैट्स अ वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अपने उसमें भी लिखा हुआ है, अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी, और जो गाइडलाइंस मैं अपनी सारी ब्राइड्स को भेजती हूँ ईमेल के साथ, कॉन्टैक्ट के साथ। प्लीज़ डू नॉट डू एनी न्यू स्किन ट्रीटमेंट बिफोर योर वेडिंग डे स्पेशली, और अगर आप कुछ करवा भी रहे हैं, लाइक वो बोटॉक्स हो, फिलर्स हो, या जो भी हो, या फिर आप कोई पीलिंग ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या जो भी ट्रीटमेंट है, प्लीज हैव इट डन एटलीस्ट 2 वीक्स बिफोर, मतलब 2 वीक्स का एम्पल टाइम आपके पास कंफर्म होना चाहिए, और अर्लियर देन दैट। फेशियल्स आर गुड, जस्ट नॉर्मल ग्लोई हाइड्रेटिंग फेशियल्स आर वेरी गुड, वो भी आप 1 वीक पहले या 4 डेज, एटलीस्ट 4 डेज पहले करा के डन कर दें। डू नॉट टेक एनी चांसेस और एनी रिस्क बिफोर योर बिग डे, बिकॉज अगर वो चीज़ आपकी स्किन को मैच नहीं किया, उसने कोई रिएक्शन कर दिया है, तो यू कैन नॉट रिवर्स इट, यू हैव Yeah. टू वेट फॉर इट, एंड ऑफ कोर्स आपकी शादी तो आगे नहीं हो सकती। तो इस तरह के रिस्की जो चीज़ें हैं उनसे ब्राइड्स को अवॉइड करना चाहिए। ये रिस्क कभी भी नहीं लेना चाहिए, और जो भी आप करा चुके हैं वो ट्रीटमेंट्स कराएं कि जो आपने पास में भी करवाए हुए हैं, और जिनका कोई रिएक्शन नहीं है आपकी स्किन के ऊपर, एंड बट अगेन you have to give a 2 weeks time for it to settle down, और आपकी स्किन को रेस्ट मिले उससे। प्लीज ब्राइड्स, डोंट डू एनी लैश एक्सटेंशंस, प्लीज डोंट डू दैट। आपको लैश एक्सटेंशंस करवानी है, आप अपनी शादी के नेक्स्ट डे जाके करवा लें, बट नॉट बिफोर द शादी, बिकॉज आपका जो भी मेकअप लुक है वो कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाता है। हमारे पास बहुत कम प्ले करने का रूम रहता है, बिकॉज इफ यू आर हैविंग अ very heavy lash extensions, then your eye makeup do not pop up, or not, you think it's looking good on you, but sometimes इट्स नॉट। सो कोशिश करें कि मैं सारी ब्राइड्स को बोलूँगी कि अगर आप इस तरह की किसी भी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो उसको अपनी शादी के बाद रखें, और उसको शादी से पहले लैश एक्सटेंशंस बिल्कुल ना यूज़ करें। व्हाटएवर द लैशेस वी एग्रीड टू पुट ऑन, वी गोना डू दैट। आप अपने डे को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से अपने फेस को रेडी रखें अपने बिग डे के लिए। और सेकंड थिंग, स्पेशली साउथ एशियन ब्राइड्स, डू नॉट गो फॉर द वेरी लाइट और वेरी ब्राइट हाइलाइट्स बिफोर योर वेडिंग डे, बिकॉज़ आपको नहीं पता आपकी स्किन टोन के साथ वो चीज़ कैसे जा रही है। मैंने कुछ ब्राइड्स को देखा है कि दे हैव अ गुड वेरी नाइस डार्क ब्राउन हेयर कलर, एंड देन दे टेक द वेरी ब्राइट वेरी लाइट हाइलाइट्स, और सम टाइम वो उनके फेस के ऊपर बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही होती हैं। एंड सो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा बोलूँगी कि प्लीज़ ये 2-3 चीज़ें हैं कि जो आपको अपनी शादी से पहले रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सारे एक्सपेरिमेंट्स अपनी शादी के बाद करें। और एक मुझे ऐड करना है एज़ अ हुँ, फोटोग्राफर, या हेयर का जो है ना, हुँ, हुँ। आजकल वो नया स्टाइल चला है कि ये 2 ऐसे स्ट्रैंड्स ना यहाँ पे सामने ऐसे, यस। सो प्रॉब्लम ये है, इट लुक्स गुड, हुँ, फ्रंट हुँ। से बहुत अच्छा दिखता है, बट यप, हम जब फोटो लेने जाते हैं ना या। डिफरेंट एंगल्स, इट हुँ, इज़ हुँ। ऑलवेज़ कमिंग इन फ्रंट ऑफ द फेस, या। राइट? जैसे अभी आपने एग्ज़ैक्टली। किया है, यू पुट हुँ, एवरीथिंग एट द बैक, राइट? द हेयर, सो यस, या, the या, lesser the hair interferes with या। the face, the या better, मोर right? क्लीन एंड Especially, मोर आपको, हाँ, एडिटिंग में भी ज़्यादा प्रॉब्लम exactly. नहीं
Yeah. है और your makeup and everything like enhances and it looks more finished on या your face. या Yeah, वो हेयर अगर that's बहुत फ्रिज़ी हो जाता है या फिर वो अब आजकल वो स्टाइल चला हुआ है, आई हैव सीन अ लॉट, आई टेल I देम नॉट know. टू डू इट फिर भी वो करते हैं। वो सामने ऐसे Exactly. आ जाते हैं एंड देन इट इट साइड प्रोफाइल आप लेने जाते हैं या कुछ करने वो हमेशा इट स्टार्ट्स That's true. इंटरफियरिंग विथ योर फेस। सो बी केयरफुल अबाउट योर हेयर डू। So not Yes, just your makeup, even hairdo becomes very, very important because you yes, yes, need to understand, and that's why talk to the इसीलिए बहुत important है talking to the photographer, MUA and you three yes, talking together, MUA and hair, so that yes. everybody's on the same page as to करना क्या है, वरना it True. starts creating dissonance. नहीं, और अगर आपने स्ट्रैंड्स कुछ लोगों को अच्छे लगते हैं फेस के ऊपर, सम टाइम कुछ लोगों का फेस बहुत वाइड होता है, बहुत ब्रॉड होता है और हेयर स्टैंड एक्चुअली थोड़ा-सा फेस को फ्रेमिंग करने में हेल्प करते हैं। बट डू द स्मॉलर वन, डोंट डू द हेवी वन्स एंड योर हेयर स्टाइलिस्ट इफ दे आर एक्सपर्ट, दे कैन हेल्प यू इन दैट बट डू नॉट गो लाइक नहीं मुझे तो यही पसंद है तो मैं यही करूँगी। Hmm. लर्न फ्रॉम द एक्सपर्ट्स के अगर वो आपको बता रहे हैं कि जी लाइट सा स्ट्रैंड आपके साइड की फेस की फ्रेमिंग के लिए अच्छा रहेगा तो जस्ट गो फॉर दैट, डोंट गो वेरी Right. हेवी front fringes. Ending All remarks? right, Sana. So thank you so much for your time and all the good advice. And the main thing is, मैं भी मैं 15-16 साल से वेडिंग्स कर रहा हूँ, तो मैं भी बहुत एडवाइस Mhm. देते रहता हूँ Yes. इंस्टाग्राम पे और व्हेन आई टॉक टू द ब्राइड्स, बट a lot of Mhm. times nobody listens to it. But Yes. our duty is to tell you guys, thank you for all the good advice, and let's hope the brides are listening and Yes. follow these advices and have a great wedding and a great look and a great visual experience. So Yes. Yes. thank you and Yeah. see you soon again. Thank you, Phoebe, for having me and for all this conversation. मुझे भी मौका मिला कि मैं अपना वर्ड आउट कर सकूं और बता सकूं कि जो मैं एडवाइसेस अपनी सारी ब्राइड्स को देना चाहती हूँ और ऑल एनी काइंड ऑफ अ ब्राइड्स लाइक दे आर नॉट माइंड बट थैंक यू फॉर गिविंग मी दैट प्लेटफॉर्म Awesome. Anytime. Thank you. Bye. थैंक यू